Okay, let's start. So in the last class we were talking about surds and indices. वो हमने topic चालू किया था, right? We were talking about surds and indices and login. ये तीन topic हमने cover किए थे. This is what we are going to discuss today in detail. So surds, indices, and log. तीन के थोड़े numerical देखेंगे. Then we'll move on to the next topic. Next topic भी काफी interesting है. That is a part of logical reasoning. केट में कभी कभार पूछा गया है एरो के पेपर की अगर बात करो तो एरोस्पेस के पेपर में नहीं पूछा गया बट अपार्ट फ्रॉम दिस एरोस्पेस बाकी ब्रांचेस में पूछे गए जो टॉपिक उनको हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे बिकॉज इससे कॉमन ट्रेंड जो हमने नोटिस किया है दैट अगर आज एक ब्रांच में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो there are high chances that the same topic will be asked in some other branch in some other you know will be asked in some other department किसी और स्पेशलाइजेशन के साथ या किसी और डिसिप्लिन के साथ वो चीज पूछी जाती है so try to see that. Let's start with some of the numericals. This is something related to log. Let's try to solve this one and tell me the answer. जी सर। Yes, okay, that's correct. So हमने कल देखा था. If you guys don't remember it from the last class, I'll just quickly revise. कि था क्या log? Right. So log a to the base b. It defines that to what power b must be reached. B must be reached to get a. ए चाहिए होगा मुझे. ठीक है. सो अल्टीमेटली मुझे x चाहिए होगा तो मैं 27 की कौन सी पावर करूंगा. सो अगर मुझे यहाँ पर x चाहिए तो 27 की 1/3 पावर करूंगा. दिस हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. जो स्टेटमेंट है इसका एकदम उल्टा जाना है. सो 27 की 1/3 पावर करूंगा देन ओनली आई विल गेट x व्हिच बेसिकली मींस द क्यूब रूट. आई नीड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 27. क्यूब रूट निकालना है. इट्स सिंपल. 27 का केस है. अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है देन आल्सो यू कैन फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स. दैट इज द इजीएस्ट वे. वहां से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो. सो इट विल बी 3. 3 will be the answer. Let's see the next one. I guess the question हम last class में कर लिया था as far as I remember. Right, so log of x to base 3 is 6. So हमें निकालना है कि भाई x 3 की कौन सी पावर पे ले जाएंगे. That is 3 की 6 पावर पे जाएंगे then only we'll get x. So x is going to be equal to 3 to 6 which is 729. ये क्वेश्चन हमने शायद कर लिया था as far as I can remember. This one was there. Try to solve this one.
So 27. 3, sir. दो आंसर आए तो मैं चेक करना पड़ेगा क्या आंसर है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। So हमें दिया हुआ है, we need to find out what is the value of log 16 to base 2 plus log 64 to base 2 plus log 3 to sorry log 9 to base 3 and log x to base 3. So हम x की वैल्यू निकालनी when this entire thing is equal to 9. ठीक है, so we'll try to solve this individually, then we will do it कि क्या आंसर आता है। ठीक है, so first of all I'll just solve it individually. So let's try to find out first of all log 16 to base 2. So what power 2 should be raised to get 16? 4. Very good. So 2 raised to 4 is 16. So यहाँ से simple आ जाएगा log 16 to base 2 is 4. Similarly, log 64 to base 2. 6. 6. 2 raised to 6 will be 64. So 2 should be raised to power 6 to get 64. Next, log 9 to base 3. So 3 का square करेंगे तब 9 मिलेगा तो 2 आ जाएगा. And this is log x to base 3. And ये हमें नहीं पता. ठीक है. This is what we are supposed to find. So let's substitute the values. So अगर मैं value substitute करता हूँ, I'll get 4 plus 6 minus 2 plus log x to base 3 is equal to 9. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 minus 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो log x 9 minus 8 and this is you'll get so log 3 sorry log x to base 3 is equal to 1। अच्छा, so basically क्या है what power the 3 should be raised to get x। ठीक है, तो it should be raised to power 1। so basically हमें क्या निकालना है 3 is to 1। x will be equal to 3 is to 1 which is equal to 3। तो x की वैल्यू आएगी 3। राइट, सो अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद रह रही है कि डेफिनेशन क्या है, वो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, देन यू कैन सॉल्व दिस वन क्वाइट इजीली। Sir, can you please explain the last step? आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पार्ट। Yes. सो ये क्या कहता है कि लेट्स से इफ आई हैव एनी नंबर log b to the base a or let's give it log a to base b, ठीक है। so let's say I have any number log a to base b is equals to x। ये डेफिनेशन क्या बोलती है, what power b should be raised, what power b should be raised to get a। ठीक है, to get a कहने का मतलब क्या है, अगर मैं b को x की पावर दूंगा देन ओनली आई विल गेट it। तो जो बेस है उसको जो हम जो राइट हैंड साइड की वैल्यू को पावर देंगे देन ओनली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ये चीज हमने की, तो बेस है, बेस को हमने 1 की पावर दी देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x और वहां से x इक्वल्स टू 3 आ। सिंपल थिंग गोज विद द डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो अगर आप लॉग की डेफिनेशन समझ लेते हो कि लॉग कहना क्या चाहता है फॉर डिफरेंट बेसिस देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। Yes. ट्राई टू सॉल्व दिस वन, बहुत सिंपल है। Zero. दैट्स द करेक्ट आंसर। तो क्या होता है, इट हैज बीन गिवन दैट log a plus log b, जब मेरे पास दो नंबर है लॉगरिथम में और दोनों एडिशन में, इट इज इक्वल टू log ऑफ a into b। तो सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तीनों एडिशन में है तो तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो आई गेट log ऑफ x square yz plus y square sorry multiplied by y square zx multiplied by z square xy। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट log ऑफ
न्यूमरेटर में मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर में y दो बार है तो y स्क्वायर आ जाएगा, z भी दो बार है तो z स्क्वायर आ जाएगा और x भी दो बार है तो x स्क्वायर आ जाएगा। So get cancelled out, you will be left with log of 1. Log of 1 हमने देखा था कोई भी नंबर हो, बेस इसका कोई भी हो, log of 1 is always 0. ठीक है, अच्छा याद रखना for any of the value or any of the value of base log of 1 is 0. ठीक है, तो log base to टाइम में नहीं होता है, ऐसे में नहीं होता, हर किसी में इशू। Try to solve this one. I'll just clarify over here that this is not related to log, rather than this is related to surds and indices. So try to solve this. Okay, I have some answers in the chat box. Let's try to solve this one. देखते हैं कैसे solve कर सकते हैं हम इसको। How do we approach this kind of questions? जहाँ पर मुझे दो पावर दी हुई है और मुझे कुछ और पावर निकालनी है। The best way is to square on both the sides. ठीक है, ये यही हमारा common method होता है। So what? How we'll start? We'll start by squaring on both the sides. Squaring on. तो ये जो स्क्वायर होगा, how it will go? It will go like x raised to power 1 by 2 plus x raised to the power minus 1 by 2 whole square is equals to 3 का square. अच्छा, ये a plus b whole square वाला फॉर्मूला होगा. So if you guys remember it from your school, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. So ये हो जाएगा x 1 by 2 whole square is 2 into x raised to the power 1 by 2 x raised to the power minus 1 by 2 plus x raised to the power minus 1 by 2 whole square. This will be equivalent to 9. सामने की तरफ है x 1 by 2 raised to power 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो गेट x सिंपल प्लस ये दोनों minus 1 by 2 plus 1 by 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये ऐड होके 0 हो जाएगा, x raised to 0 हो जाएगा यहाँ पर 2 into x raised to 0 प्लस यहाँ पर ये जो 2 2 कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस 1 बचेगा, सो दिस विल बी x raised to minus 1 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x raised to सॉरी x plus x raised to minus 1 एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, तो ये जो चीज है ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो दिस विल बी 2 into 1 यानी कि 2, तो सामने हो जाएगा 9 minus 2 x raised to x plus x raised to minus 1 will be equal to 7. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. अगेन अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ जाऊंगा. सेकंड स्टेप में व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे ये तो नहीं निकालना, मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए होगा, सो आई विल बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगेन.
अगेन ये जो इक्वेशन है मेरी, इसको मैं स्क्वायर करूंगा, सो आई गेट x स्क्वायर प्लस 2 into x is to power minus 1 plus x is to power minus 1 whole square. This will be equal to 7 square. Or it will be equal to x square plus 2 plus x is to power minus 2 which is equal to 49. यहाँ से मुझे मिल जाएगा x square plus x is to power minus 2, 49 minus 2 यानी कि 47. This will be your final answer. ठीक है, I got some answer in the chat box. कुछ सही है, कुछ सही नहीं है. अच्छा, ये क्वेश्चन ना ऐसे टाइप क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं. सर ये भी वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, इसको आप सॉल्व कर सकते हो. लाइक इफ इट हैज बीन गिवन if x plus 1 by x is equals to 9, आपको ऐसा दिया होगा and you're supposed to find out, let's say find first x square plus 1 by x square. तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, you have to square on both the sides. ठीक है, और इसको सॉल्व करना है. सिंपल फॉर्मूला ऐसा बोलता है, जो भी राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है ना उसका आपको स्क्वायर करना है और -2 कर देना. ठीक है, आपको उसको स्क्वायर करना है और आपको -2 कर देना. सो इट विल बी 81 minus 2 यानी कि 79 आता है. नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज x raised to 4 plus 1 by x raised to 4, तो सेम प्रोसीजर रिपीट होने वाला है. यहाँ पर RHS में मेरे पास हो जाएगा 79. ठीक है, सो 79 तो मेरे पास है, इसका स्क्वायर माइनस इसको जब आप सॉल्व करोगे दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस वन. सिंपली आपको राइट हैंड साइड पे जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, -2 करना है. सिंपल प्रोसीजर यही है. कैसे क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, तो ये प्रोसीजर है जिसकी वजह से हर बार हम -2 कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी द नेक्स्ट वन. ट्राई टू सॉल्व दिस वन. Okay, let's see how this can be solved. I'll give you a little bit of hint over here. Then I'll again give you some time to solve this. So first and foremost step, जब भी ऐसा कुछ होता है, you have to rationalize. Rationalize x.
हाउ टू रेशनलाइज, इट्स सिंपल. जो भी नीचे आपको टर्म दिया हुआ है, जैसे न्यूमरेटर में मुझे दिया हुआ है √5 माइनस √3, डिनोमिनेटर में आई हैव बीन गिवन √5 प्लस √3. तो जो भी मुझे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, अच्छा रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, इन डिनोमिनेटर यू विल बी हैविंग रैशनल नंबर. डिनोमिनेटर में आप रैशनल नंबर लेकर आते हो, न्यूमरेटर के बाद में हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो जो भी मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पर दिया हुआ है, सेम नंबर आई एम गोइंग टू राइट. तो √5 और √3 लिखने वाला हूँ. द थिंग इज, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है डिनोमिनेटर में, सो आई विल बी गिविंग माइनस साइन. एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर आल्सो. ये चीज जो मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उससे मैं ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट डज नॉट क्रिएट एनी ऑफ दिस. जब ये करने जाते हैं हम तो क्या आता है हमारे पास, इन द न्यूमरेटर आई गेट √5 माइनस √3 होल स्क्वायर. और नीचे मेरे पास क्या होगा, नीचे जो आइडेंटिटी यूज होगी दैट विल बी a प्लस b a माइनस b, which becomes a square minus b square. तो यही आइडेंटिटी यूज होगी एंड दिस विल बी यूजफुल इन रैशनलाइजिंग द एंटायर दिस एक्सप्रेशन. क्या हो जाएगा आपके पास, √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. तो अब ऊपर हम यूज करते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 प्लस √3 स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. अच्छा यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, √5 का स्क्वायर हम 25 लिख लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. √5 है तो √5 का जब हम स्क्वायर करने जाएंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, विल बी 5 है. ठीक है, अब न्यूमरेटर की बात करते हैं. न्यूमरेटर में मेरे पास √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस 2 √15. ठीक है, तो रूट के अंदर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, प्लस 3 आएगा एंड डिनोमिनेटर मेरे पास आएगा 2, 5 माइनस 3 is 2. इसको if I solve it further, so I'll be having 5 plus 3 8 plus 2 √15 divided by 2. ठीक है, अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर में से, so I'll be left with 4 plus √15. ठीक है, ये मुझे मिली किसकी वैल्यू, अच्छा ये जो वैल्यू है मैंने क्या किया है, मैंने x की वैल्यू निकालने की कोशिश की. सो आई सिंपलीफाइड x. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं सो 8 टाइम्स x यानी कि 4 प्लस √15 माइनस x स्क्वायर. सो x स्क्वायर क्या है, 4 प्लस √15 स्क्वायर. ठीक, सो अब ये दो एक्सप्रेशन आया, मुझे इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. तो आई विल टेक 4 प्लस √15 कॉमन, यानी कि x मैं कॉमन ले रहा हूं. सो आई विल बी लेफ्ट विद 8 माइनस 4 प्लस √15. ये जो होगा ये ब्रैकेट, दिस विल बिकम 4 प्लस √15 और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 2. ठीक है, 8 माइनस 4 आपका हो जाएगा 4. सो आई हैव 4 प्लस √15 एंड 4 माइनस √15. अगेन a प्लस b a माइनस b आया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस √15. 4 स्क्वायर हमको पता है 16 एंड √15 का स्क्वायर हो जाएगा 15. So this will be 16 minus 15, यानी कि so everything you, the only thing that you need to do over here is to simplify this expression. आप एक बार simplify कर लेते हो, rationalize कर लेते हो, then this becomes very very easy. कुछ नहीं है इसमें. I hope this is clear. Now let's move on to the next topic जो आज हमें पढ़ना है. So in today's topic we are going to talk about, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दूसरे ब्रांचेस में पूछे जाते हैं लेकिन शायद एरो में इतना बार पूछे नहीं गए. So we are going to talk about that particular topic कि वो topic है कौन सा. ठीक है, so today we are going to talk about cubes and dices. Cubes and dices. Let's talk about them कि cube क्या होता है, dices क्या होता है. So I hope सबने cubes तो देखे होंगे. I'll be giving a simple example of a cube. ठीक है, Rubik cube काफी ज़्यादा famous है. What we have faces like this. हमारे पास and these faces are divided using certain lines. So हमारे पास lines बनाई हुई होती हैं जिससे इस face को divide किया जाता है.
this is how we have this cube. अच्छा ये cube की अगर मैं बात करूँ, if I want to define certain properties related to this cube, तो पहली चीज जो हम डिवाइड करते हैं that is corners. These corners are also known as vertices. Any of the cube or cuboid, अगर आप जनरल की बात करो ज्योमेट्री के अंदर, so it has 8 corners or 8 vertices. We talk about faces, it has 6 faces. And if you talk about edges, उसको नॉर्मल में साइड्स भी बोलते हैं, it will have 12 sides. यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज अ टिपिकल क्वेश्चन जो यहाँ पर you'll find this kind of question. अच्छा ये क्वेश्चन ना वहाँ पर ही पूछा गया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए, सीसेट का एक पेपर आता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. क्यूब्स इज देयर फेवरेट टॉपिक. क्या करेंगे, दे विल हैव दिस क्यूब और इसको ये कलर कर देंगे चारों तरफ से, दे विल कलर इट अप फ्रॉम ऑल द साइड्स और फिर इसको कट करेंगे. ठीक है, सो n बाय n पीसेस में इसको कट किया जाता है. सो लेट्स से देयर इज अ क्यूब which has been cut into pieces, after painting all sides or pieces after painting all pieces. हर एक पीस को उसका पेंट करके हम इसको कट करते हैं. अच्छा इसको जब कट कर रहे होते हैं, so we'll divide it into n cublets. n cublets. Cublets मतलब छोटे छोटे पीस जो हमारे बन रहे हैं. ठीक है, सो कहने का मतलब ये क्यूब का जो डायमेंशन था आपका, ठीक है, दिस डायमेंशन वाज बेसिकली n क्रॉस n, और ये जो n क्रॉस n है, इतने ही नंबर ऑफ क्यूबलेट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, काट दिया. ठीक है, सो फॉर द गिवन एग्जांपल, जो इस एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, दैट इज अ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्यूबलेट. ठीक है, सो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इनटू 27 पीसेस. हमने इसको कट कर दिया. अब आगे बढ़ते हैं. So जब हम इसको कट करते हैं, क्वेश्चन गोज लाइक दिस, द नंबर ऑफ क्यूब्स with only one face painted, one face painted. तो इसमें क्या होता है जब हम इसको कट कर रहे होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लाइक दिस वन. ठीक है, मैं किसी एक को हाईलाइट कर देता हूँ so we'll get an idea. तो जब हमने इसको पेंट किया, so ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस विल बी द क्यूब जिसका सिर्फ एक ही फेस पेंटेड होगा, क्योंकि अंदर तो हमने पेंट नहीं किया, हमने सिर्फ बाहर की सरफेस पे पेंट किया हुआ है. तो ये वाला जो हिस्सा है इसका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा. ठीक है, ऐसे टोटल कितने होंगे हमारे पास, सो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीसेस जिसमें हम इसको कट कर रहे हैं, एंड दैट इज यूजुअली इक्वल टू n minus 2 square cross 6. ठीक है, n minus 2 मतलब जितने भी नंबर ऑफ पीसेस है, सॉरी जितने भी नंबर ऑफ जो हमने n क्रॉस n किया है, उसमें से 2 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है और 6 से मल्टीप्लाई करना है. अच्छा ये जो 3 क्रॉस 3 है, इसके लिए कितने हो जाएंगे, Six. यस इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इसके लिए हमारे पास हो जाएंगे 6. और 6 कैसे होंगे, सो ईच ऑफ द फेस उसका जो सेंटर वाला जो पीस होगा, फेस के सेंटर वाला जो पीस होगा, that will not be that will be painted with only one face. ठीक है, so इस केस के लिए हमारे पास जो आंसर होगा that will be equivalent to 6. ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं. Then we'll talk about different types of cubes as well. उसकी हम बात करेंगे. Now let's change the question and let's find out the number of cubes with only 2 faces painted. ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो ये कौन से होते हैं बेसिकली, सो लेट्स टॉक अबाउट ये जो येलो है इसके ऊपर वाले की मैं बात करता हूँ. तो ये जो है इसमें एक ये वाला फेस आएगा जिसको पेंट किया गया है, और एक ये वाला फेस आएगा जिसको पेंट. ठीक है, वैसे ही इस साइड वाले जो होते हैं ये भी दो ऐसे ही निकलते हैं. इस साइड वाला भी यही ऐसे निकलेगा. ये भी ऐसे निकलेगा. तो जो बीच वाले जो दिख रहे हैं आपको,
सेंटर से अलाइंड होते हैं और जो बीच वाले होते हैं, these will be the faces जो हमारे दो, जिसमें दो फेसेस पेंटेड होंगे, जिसमें दो फेसेस पेंटेड होंगे, ये वो वाले क्यूब नहीं। तो ऐसे टोटल कितने होते हैं, ऐसे टोटल कितने होते हैं अगर आप बात करें, सो विल ट्राई टू फाइंड आउट कितने होते हैं यहाँ पर। राइट, सो दिस इज सिंपली गिवन बाय अ फॉर्मूला जो होता है n-2 into 6. So we don't need to, sorry, not into 6, जितने थे पहले उसके डबल हो जा रहे हैं यहाँ पर। राइट, सो इस केस में ये हो जाएंगे सिंपली 12 के बराबर, ठीक है, बिकॉज n इज इक्वल टू 3, सो ये डायरेक्टली 12 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी 12 के बराबर कैसे हो जाएंगे, सो 1 2 3 4 ऑन दिस साइड, 4 ऑन दिस साइड एंड 4 इस कॉर्नर, बीच वाले कॉर्नर। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो फेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको अगर मैं कट करूँ तो यहाँ पर मेरे 4 पीस निकलेंगे जो ब्लू कलर के। देन बीच वाली अगर मैं फेस की बात करूँ, इसको अगर कट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास 4 और निकलेंगे, टोटल 8 हो गए, और पीछे की तरफ 4 और निकलेंगे, टोटल 12 निकलेंगे ऐसे पीस जहाँ पर सिर्फ दो फेसेस कलर है, ठीक है, सिर्फ मेरे दो फेसेस कलर है, वैसे मेरे पास 12 पीस निकलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको फॉर्मूला भी करवा रहा हूँ, एंड आई एम आल्सो टेलिंग यू द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड इट आउट। बस एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार या तो फॉर्मूले याद नहीं आते, और अगर आप काउंट करने जाओगे तो काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज काम की है कि भाई अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इट्स बेटर, वेल एंड गुड। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स विद 3 फेसेस पेंटेड, ठीक है। तो जब हम इसको कट कर रहे हैं तो इसमें से कुछ क्यूब ऐसे भी निकलेंगे जिनके 3 फेस पेंट किए होंगे, तो कौन से होंगे, बेसिकली दीस आर द फेसेस, दिस विल बी द फेसेस जो कॉर्नर में होंगे हमारे पास, उस कॉर्नर वाले ऐसे हैं जो 3 फेसेस को एक साथ टच कर रहे हैं। ये भी होता है। अच्छा, हाउ मेनी कॉर्नर्स डू वी हैव इन दिस पर्टिकुलर क्यूब, 4, पीछे की तरफ तो 4 होंगे। अब इसमें कॉर्नर्स जो होंगे दैट विल बी 8 टोटल, 4 आगे की फेस की तरफ, 4 पीछे की फेस की तरफ, टोटल 8 कॉर्नर होंगे। तो दिस काइंड ऑफ क्यूब्स विल बी 8। और अगर इसमें अगर नंबर ऑफ पीसेस अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, चाहे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, देन आल्सो कॉर्नर्स हमारे पास 8 रहने वाले, तो ये हमेशा 8 ही रहते हैं, चाहे कोई भी क्यूब का नंबर हो, कुछ भी हो, तो ये हमेशा 8 ही रहते हैं। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, नंबर ऑफ क्यूब्स विथ नो फेस पेंटेड। जब हम इसको कट कर रहे होते हैं तो ये तो मैंने सिर्फ सरफेस की बात की, इसके अंदर से क्यूब ऐसे निकलते हैं जिसमें कोई भी सरफेस पेंट नहीं किया हुआ होता। तो बेसिकली वो कितने होते हैं, सो दे आर n-2 का क्यूब, ठीक है, n-2 जितने साइड्स हैं उसके उसमें से 2 माइनस करके उसका क्यूब अगर आप निकालोगे, इस पर्टिकुलर केस की अगर आप बात करो, इस पर्टिकुलर केस में हो जाएंगे 1, ठीक है। तो ये जब हम इसको कट कर रहे होंगे तो एक सेंटर में एक क्यूब निकलेगा जिसमें कोई जो किसी भी सरफेस को टच नहीं कर रहा है, किसी फेस को टच नहीं कर रहा है, उस केस में उसका जो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्यूब हो जाएंगे विद नो फेसेस पेंटेड, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो बीच वाला निकलेगा वही होगा, राइट। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो पूछा जाता था किसमें, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया, आई गेस 2019 में पूछा गया सीसेट के अंदर क्वेश्चन। Let's take an example over here, then we'll try to get it more clear. Let's say we have a cube. If a cube is cut in 4 cross 4 cross 4 cubelets, then how many cubes have? I'll start with the part
only one face color. Second, only two face color. Only three face color. And fourth, no face color. Okay. Let's try to solve this one. 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, तो n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 4. टोटल नंबर ऑफ क्यूबलेट्स कितने होने चाहिए? यस, what should be equal to total number of cubelets? Let's try to see. So पहला मैं वन फेस पेंटेड की बात करता हूँ. So वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला था n minus 2 square cross 6. ठीक है, तो सेम फॉर्मूला we'll try to start with. So only one face is n minus 2 square into 6. Total number will be 64. That's correct. अब यहाँ पर n की वैल्यू है 4. 4 minus 2 square cross 6. It should become 2 square cross 6. That will be equal to 24. ठीक है, ये आपका पहले का आंसर होगा. दूसरे का आंसर n minus 2 into 12. 4 minus 2 into 12 यानी कि 2 into 12 हो जाएगा आपके पास, which is होगी 20. तो वन फेस वाले भी 24 होंगे, टू फेस वाले भी 24 होंगे. थ्री फेस इज ऑलवेज 8. याद रखना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 8. ठीक है, एंड नो फेस कलर्ड इट इज n minus 2 का होल क्यूब. So 4 minus 2 यानी कि 2 का होल क्यूब. This will also be equal to 8. ठीक है, now let's add them up to verify कि हमारा जो आंसर आया that is correct or not. So 24 and 24 48. 48 plus 8 56. 58 plus 6 64. The total number of cubelets will be equal to 64. That is correct. ठीक है, so 24 will be one face colored, then two face, then three face, then four face. Okay, we have already done it for 3 cross 3. Now let's solve. Okay, before solving some questions, let's complete one more thing. तो ये बात होगी क्यूब्स की, राइट? जो क्यूब्स हमने देखे उसकी ये बात होगी. Now there is one more subtopic over here, that is dice. So let's talk about dice. Dice is an interesting thing. जो हम बहुत बार देखते हैं. It has 6 faces. Again, it is made up of cube and it has 6 faces. Right, and it is numbered from 1 to 6. Now this has been divided into two parts. ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. The first category is known as symmetric dice. The second category is known as asymmetric dice. What is symmetric dice? So symmetric dice वो होते हैं in which the sum of numbers in opposite faces is always 7. जिसमें हमेशा जो अपोजिट फेज होते हैं वो 7 का सम हमेशा 7 होता है. मतलब एक साइड अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक साइड आपके पास 1 आ गया है, दूसरे दिस विल बी 6. अगर एक साइड पे 2 आ गया तो दूसरी साइड पे 5 होगा. अगर 3 आ गया तो 4 होगा. अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7. तो आप घर पे अगर आप लूडो खेल रहे हो तो उसके अंदर जो डाइस होता है दैट इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक डाइस. बट वी आल्सो हैव asymmetric dice, and in asymmetric dice the sum of numbers in opposite faces is not equal to 0. Opposite faces is not equal to 0. तो इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास that becomes a asymmetric dice. ठीक है,
सो एग्जाम के अंदर हमसे सिमेट्री टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द asymmetric types. What kind of questions are being asked? Let's see that one. Just give me 1 minute. I'll be sharing my screen once again. Screen share कर रहा हूँ. Okay. Anyways, I'll be telling you to solve this. How to solve this question वो मैं method आपको बताऊंगा. But I want you to try it once. एक बार try कीजिए कि कैसे इसको solve कर सकते हैं. What will be the answer? Five. Okay, let's see how we can solve this question. 5 will be the correct answer. So 3 different positions of a dice are shown in the following figures. How many dots lie opposite to 2 dots? So 2 dots के side में कौन सा लग रहा है वो हमें देखना होगा. Now this is purely on your observation how you can observe this one. So देखो पहले केस की हम बात करते हैं, फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं. फर्स्ट फेज में 2 डॉट्स दिए हुए हैं और मुझे 3 फेज दिख रहे हैं. एक टाइम पे आई कैन सी 3 फेसेस. सो आई नीड टू एनालाइज दिस फेसेस. सो जो 2 डॉट्स हैं इसके साथ में मेरे पास दिया हुआ है 4 एंड 6. अभी अगर एडजेसेंट है सो दे कैन नॉट बी अपोजिट. दे कैन नॉट बी अपोजिट. अगर वो साथ में तो वो सामने की तरफ तो हो नहीं सकते बिकॉज़ इट हैज बीन नो इट इज एन असिमेट्रिक डाइस. इसके साथ में नंबर भी नहीं हो सकता. नंबर हो सकते हैं नहीं हो सकते दैट विल सी. बट इसके पीछे हो सकते हैं जो नंबर है वो मैं लिख लेता हूँ. सो जो मेरे पास 2 है 2 के अपोजिट में मेरे पास अभी कौन-कौन सी पॉसिबिलिटीज है. तो 4 और 5 को 4 और 6 को छोड़ के यानी कि 1 हो सकता है. 2 itself is there. 3 है 4 है और 5 है. ठीक है. Why? Because 4 and 6 eliminated. 4 and 6 eliminated from this one. ठीक है. अब सेकंड की बात करते हैं. तो सेकंड में मुझे क्या दिया हुआ है 1 5 and 6. ठीक है. सो अब मुझे ये दिया हुआ है कि भाई ठीक है. सो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि 1 जो 5 जो है दैट इज अलोंग विथ 1 एंड 6. सेकंड फिगर की मैं बात कर रहा हूँ. सो सेकंड फिगर में मुझे ऐसा दिया है 5 इज अलोंग विथ 1 एंड 6. तो इसके अपोजिट तो हो नहीं सकता. ठीक है. सेकंड फिगर में मुझे ऐसा दिया हुआ है लाइक इसमें मुझे दिया हुआ है दैट 5 इज 5 के एडजेसेंट में कौन-कौन है. राइट. ये मैं अपोजिट की बात कर रहा हूँ. ये मैं एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ. सो
इसमें मुझे दिया हुआ है 5 के एडजेसेंट में है 1 एंड 6 और यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 5 के एडजेसेंट में है मेरे पास 3 एंड 4। तो 3 एंड 4, तो अब मेरे पास ये भी एडजेसेंट की बात है। तो 5 के अपोजिट की मैं बात करूँ तो 5 के अपोजिट में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है? 1 हो सकता है, नहीं 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 खुद तो हो ही नहीं सकता और 6 भी नहीं हो सकता। ये तो मेरे पास प्रूफ है। तो इट विल बी ओनली 2 जो 5 के अपोजिट है और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि भाई 2 के अपोजिट 5 हो सकता है। करेक्ट आंसर विल बी 5। 5 will be your correct answer in this case. You have to reduce the logic कि कहाँ से किस चीज को use करके we can identify the answer. Let's try to solve this one. Five. Let's see what will be the answer. ठीक है, तो यहाँ पर a dice is thrown 4 times and its 4 different positions are shown in the following figures. What is the number on the face opposite to face showing 2? तो 2 के अपोजिट निकालना है। सो फर्स्ट से मुझे पता चल सकता है कि भाई 2 के अपोजिट में 4 और 6 तो है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दे दिया कि 4 एंड 6 आर रिजेक्टेड। सेकंड में मुझे मिल रहा था 4 तो वैसे भी नहीं था, 3 इज आल्सो रिजेक्टेड। सो 3 इज आल्सो रिजेक्टेड। एंड लास्ट में अगर आप देखना चाहो तो 3 तो ऑलरेडी हो चुका था, 1 इज आल्सो रिजेक्टेड। सो 1 इज आल्सो रिजेक्टेड। तो मेरे पास जितने भी ऑप्शन बचते हैं 2 के अपोजिट में, दैट इज 1 3 4 5 6, उसमें से सबसे पहले जो रिजेक्ट होते हैं वो होते हैं 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 गया, देन 3 भी गया, देन 1 भी गया। ओनली करेक्ट ऑप्शन लेफ्ट इज 5। 5 ही बचेगा मेरे पास। ये सी वाला जो फिगर था, इफ यू डोंट इवन नीड दिस, राइट, अगर आप समझ सॉल्व करो तो इसकी जरूरत भी नहीं है हमारे पास। And obviously यहाँ पर since 2 is not given, so if you even if you are not using it, then also it is fine. Okay. Let's move on to the next one. Yes, try to solve this one. Yeah, अच्छा question. Two. Okay. So observe the dots on the dice and the following figures. How many dots are contained on the face opposite to that containing 4? तो पिछले वाले में तो हमें भाई 4 3 फिगर दिए गए थे, so we had a lot of options. बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही फिगर दिए हुए हैं। So जब 2 फिगर दिए हुए होते हैं, so in most of the cases, remember this part when low number of figures are given or when only 2 figures are given.
उस केस में यू कांट यूज एलिमिनेशन, जो हम पिछली बार कर रहे थे। जैसे हम एलिमिनेट कर रहे थे नंबर को, यहाँ पर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दो ही टेस्ट दिए हुए, आप कितनों का एलिमिनेट करोगे कर करके। उसमें भी 4 जो है वो तो सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, तो आप 5 और 1 को एलिमिनेट कर सकते हो, उसके अलावा तो किसी को कर नहीं सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। यू नीड टू नोटिस कि भाई राइट हैंड साइड पे आई हैव वन थिंग इन कॉमन। क्या है वो? 5। ठीक है, 5 यहाँ पर मेरे पास कॉमन है। एंड 1 जो है, 1 इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, 1 इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। सो अब मैं यहाँ पर लेट्स से अज्यूम एन एक्सिस ओवर हियर, कहाँ पर? दैट इज परपेंडिकुलर टू द फेस कंटेनिंग दिस 5 डॉट्स। ये जो 5 डॉट्स वाला जो फेस है, इससे परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, और आई एम रोटेटिंग द डाइस ओवर हियर। ऐसे ऐसे मैं इसको ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ तो होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 1 तो ऊपर चला जाएगा मेरा, जो 1 यहाँ पर था। एंड ये जो 2 था ये क्या हो जाएगा, ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो 2 पीछे की तरफ चला गया, और आगे की तरफ क्या आ गया? आगे की तरफ 4 आ चुका है। ठीक है, तो ये 2 जो था ये चला गया पीछे की तरफ, तो ये यहाँ से पीछे की तरफ चला गया। बस सिंपल समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है? द डॉट्स ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग ऑफ 4 डॉट्स। तो 4 डॉट्स आगे की तरफ है, लेकिन ये 2 वाला जो था जब हमने रोटेट किया तो ये पीछे की तरफ चला गया, तो 4 के अपोजिट आ गया 2। द करेक्ट आंसर विल बी। ठीक है, जब एलिमिनेशन नहीं होता यूज रोटेशन। रोटेशन मेथड काम करता है, बहुत सारे टाइप पे काम करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सॉल्व दिस वन। One. Now, in this case, elimination is possible. देखो again, if you see only 2 cubes are there, you can use rotation. Even rotation से भी ये number ये solution आ ही जाएगा, but elimination will be a better method than rotation. तो हमें क्या दिया हुआ है? To position of a cube with its surface is numbered or shown in the figure. When the surface 4 touches bottom, which surface will be on top? देखो पहले में हमारे पास 3 2 आ गया है, दूसरे में 5 6 आ गया है। इसे बता रहे हैं भाई ये जो 4 सरफेसेस हैं आगे पीछे की तरफ, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर है कि भाई ये आगे वाला जो है, यहाँ पर अगर आप 3 रखते हो, यहाँ पर 2 रखते हो, तो 6 और 5 यहाँ कहीं पे है। ऊपर तो हमारे पास 1 ही है, बचा नीचे 4। तो 4 जब नीचे होगा तो ऊपर हमारे पास क्या होगा? ऊपर हमारे पास will be 1। ठीक है, जो यहाँ पर दोनों केसेस में दिया हुआ है। दोनों केसेस में 4 कैन बी मेंशन नहीं किया हुआ है, सो 4 बाय डिफॉल्ट इज इन बॉटम इन बोथ द केसेस। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। Okay, got one answer in the chat box. That's correct.
let's try to see क्या होगा. The dice is numbered from 1 to 6 in different ways. If 2 is opposite to 3, so let's have an imaginary dice with us. Now, first condition is given. The 2 is opposite to 3. तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए let's call it the front face is having 2, that आगे तरफ, and the back face is having 3. ठीक है, so 2 and 3 are opposite and adjacent to 4 and 6. So 2 is adjacent to 4 and 6. ठीक है, so ये मैं back surface की बात कर रहा हूँ, back face की बात कर रहा हूँ. back face का हो गया 3. Now it is adjacent to 4 and 6. So आपके पास 4 और 6 जो है वो 2 के साथ में. So let's say जो right hand side वाला है, that is your 4. Right, so right face is 4. It is adjacent to 2 and top या bottom हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें. Let's take it in the bottom. Right, so bottom वाला जो surface है, that is 6. ठीक है, तो हमें 4 मिल गए फेसेस. अब हमें दिया हुआ है 1 is adjacent to 2 and 3. So 1 तो हमें दिया हुआ नहीं है. So 1 के लिए दो पोजीशन कौन सी बची है? Either the top surface or the left hand side surface. ठीक है, so let's try to do that. So let's say top surface जो है वो 1 है. I'll consider the first case कि top surface 1 है. So ये वाली surface आपकी हो जाएगी top surface 1 है. अगर left face जो हो जाएगा that will be 5. वो एक नंबर बचा हुआ. अगर टॉप सरफेस 5 हो जाती है तो लेफ्ट सरफेस हो जाएगी आपकी 1. ठीक है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है हमारे पास. तो मैं दो अलग अलग डाइस नहीं बना रहा रिप्रेजेंट करने के, मैं एक ही डाइस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. नाउ फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि भाई टॉप सरफेस जो टॉप फेस है वहां पर 1. सो 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3. यस, अगर 1 यहां पर ऊपर है तो 2 जो है वो फ्रंट फेस में और 3 जो है बैक फेस में. तो टॉप सरफेस है वो फ्रंट और बैक दोनों को कनेक्ट कर रही है. सो दैट इज ट्रू. दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि भाई जो 1 है, लेट्स से दैट इट इज ऑन द लेफ्ट फेस rather than being on top face, it is on the left hand side. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है देन आल्सो जो 2 है वो फ्रंट पे है और 3 जो है वो बैक पे. सो 2 और 3 दोनों को टच कर रही है. सो इन बोथ द केसेस 1 is going to be adjacent to 2 and 3. So this is going to be okay, true condition. So दो केसेस आ रहे हैं, दोनों केसेस को हमने एनालाइज किया, दोनों केसेस में ये चीज ट्रू आ रही है, इसलिए वी आर कंसीडरिंग इट टू बी. Let's see the next one. Sir, can you please explain one? Let me draw two different cubes so that it is easier for me to explain. First condition ऐसा बोल रहा है that 2 is opposite to 3. So for the easiness of calculation मैं ऐसा assume कर रहा हूँ कि 2 आगे की तरफ है और 3 पीछे की तरफ है. 2 आगे की तरफ है, 3 पीछे की तरफ है. And 2 is adjacent to. So 2 is opposite to 3 and adjacent to 4 and 6. So 2 के आजू बाजू में 4 and 6 है. अब 2 के आजू बाजू में मेरे पास 4 सरफेस है, राइट, टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम. तो मैं इसमें से कहीं पे भी 4 और 6 ले सकता हूँ. सो लेट्स से मैं यहाँ पर 4 अज्यूम कर रहा हूँ और जो ऊपर की सरफेस है, ठीक है, ऊपर की सरफेस में 6 अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया. अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक लेफ्ट का और एक बॉटम का. यहाँ पर मुझे दो नंबर सेट करने हैं 1 और 5. ठीक है, सो अगर मैं लेफ्ट स्पेस पे 1 सेट करता हूँ सो बॉटम विल बी 5 बाय डिफॉल्ट. अगर मैं बॉटम पे 1 सेट करता हूँ सो लेफ्ट विल बी 5. यार ठीक है, तो ये मेरे पास क्यूब बन गए, दो पॉसिबल क्यूब फ्रॉम द गिवन कंडीशन. दो क्यूब बन रहे हैं बिकॉज़ 1 या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो बॉटम में हो सकता है. ठीक है, तो दो क्यूब बन गए. अब हम बात करते हैं कंडीशन की. कंडीशन या स्टेटमेंट बोला हुआ है 1 इज एडजेसेंट टू 2 and 3. सो 1 यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फेस है इट इज कनेक्टेड टू फ्रंट फेस एंड द बैक फेस, दोनों तरफ से कनेक्टेड है. ठीक है, सो दिस इज ट्रू दैट 1 इज एडजेसेंट टू 2 and 3 इन फर्स्ट केस, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 1 अज्यूम किया हुआ है या जो आ रहा है वहां पर वो 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है. सेकंड केस की बात करते हैं. सेकंड केस में 1 हमने कहां लिया हुआ है? बॉटम सरफेस में. तो बॉटम सरफेस अगेन इट इज एडजेसेंट टू 2 and 3. यस, बिकॉज़ आपका 2 जो है वो फ्रंट सरफेस पे है और 3 जो है वो बैक सरफेस पे है. तो अगर आप बॉटम सरफेस की बात करो
सो बॉटम सरफेस इज कनेक्टेड टू फ्रंट एज वेल एज बैक। सो ये भी कंडीशन सही होती है जिसकी वजह से ये ट्रू बन जाता है। दो कंडीशन जो मेरी आ रही है दोनों में ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो भले ही 1 और 5 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो, लेकिन कोई भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उन दोनों केस में दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू, इज गोइंग टू बी करेक्ट। So clear. लेट्स सॉल्व दिस वन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। Let's see what is the correct answer. So three positions of dice are shown in the figure. Which number lies opposite to 6? तो यहाँ पर 6 मेरे लिए important है, ठीक है। पहले फिगर में 6 नहीं दिया हुआ है, so इसको अभी के लिए मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। I'll go to second figure. Second figure में 6 दिया हुआ है, so 6 के adjacent में मुझे दिया हुआ है 3 and 4. Right, so adjacent की अगर मैं बात कर रहा हूँ, so 3 and 4 are adjacent to 6. भाई अगर आप C की बात करो, C में मुझे दिया हुआ है कि भाई 2 भी adjacent है और 5 भी adjacent है, ठीक है। तो ये चारों तो एडजेसेंट फेसेस में आ गए, तो अपोजिट के लिए एक ही बच रहा है, दैट इज 1। अपोजिट टू 6 विल बी 1, ठीक है। तो बी एंड सी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, एक ही जरूरत नहीं है देखा जाए तो। एंड दिस हाउ वी कैन सॉल्व दिस। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट वन फॉर द डे। आज के लिए लास्ट है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन, देन विल टॉक अबाउट इट कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। Okay, I got one answer. Let's try to solve this one. कि है कैसे ये? So I'll make a cube over here for my convenience, and then I'll give the numbers. कि कौन कौन से नंबर कहाँ पर आए। Let's make this. Now one should be पहली condition. So these are some condition which are given for cube. हमें नीचे बताने दो आंसर। What is the face opposite to 1 and what is the face adjacent to 3? The face is adjacent. पहला में दिया हुआ 1 should be between 2 and 3. So 2 और 3 के बीच में 1 आना चाहिए। So अगर मैं 2 ऊपर लेता हूँ और 3 नीचे लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में 1 आना चाहिए। So हम कहीं पे भी रख सकते हैं, आगे भी रखिए चाहे साइड में रखें। मैं साइड में रख रहा हूँ for my convenience, ठीक है। 2 should be opposite to 3, तो 2 और 3 opposite हो गए। 2 टॉप में 3 बॉटम में, तो ये opposite हो चुके हैं। Now 4 should lie between 5 and 6. 4 जो होना चाहिए वो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए, and 5 and 6 should lie। यहाँ पर एक चीज हो चुकी है, that I'll just try to correct। जो लास्ट कंडीशन है 4 should lie face down, ठीक है। So
4 को हमें नीचे रखना है, तो मैं 4 से चालू कर दे रहा हूँ भाई। 4 हमारा नीचे आ चुका है, 4 यहाँ पर आ चुका है नीचे की तरफ। एंड 4 शुड लाई बिटवीन 5 एंड 6, तो 5 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंड 6 में 7 ले लेता हूँ। ठीक है, सो 5 और 6 के बीच में 4 आ चुका है। 5 एंड 6 शुड लाई अपोजिट टू ईच अदर, तो अपोजिट भी है। नाउ 2 शुड बी अपोजिट टू 3, अब मैं सेकंड कंडीशन पे जा रहा हूँ। 2 शुड बी अपोजिट टू 2, यहाँ पर लेता हूँ तो 3 पीछे की तरफ आएगा, या 3 आगे लूंगा, 2 पीछे की तरफ आएगा, कोई पीछे जाएगा। 1 should be between 2 and 3, so 1 ऊपर की तरफ आ जाएगा, 1 should be between 2 and 3, सब कंडीशन सेटिस्फाइड है। ऐसा कभी भी आप कर रहे हो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट। फर्स्ट कंडीशन 1 should be between 2 and 3, 1 should be between 2 and 3, correct. 2 should be opposite to 3, 2 should be opposite to 3, correct. 4 should be between 5 and 6, 4 is lying between 5 and 6, correct. 5 and 6 should be opposite, 5 and 6 should be opposite, and 4 should lie face down, so 4 नीचे की तरफ है। Now the face opposite to 1, obviously यहाँ पर आप फिगर में देखते हो, it is going to be 4. You got your first answer quite easily, 4 आएगा यहाँ पर। The face is adjacent to 3, so 3 के साथ में कौन कौन से faces होंगे, that you need to find out. So yes, that is ऊपर की तरफ एक होगा 1, 1, then लेफ्ट हैंड साइड पे होगा 5, सॉरी राइट हैंड साइड पे होगा 5, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा 6 एंड बॉटम पे होगा 4। ठीक, सो 1 5 6 4, एक्चुअल में 4 फेसेस होंगे, सो आई गॉट द आंसर्स जिसमें 3 फेसेस लिखे हुए हैं, सो जस्ट करेक्ट इट, यहाँ पर 4 फेसेस होंगे, 1 5 6 4, चारों दे आर एडजेसेंट, दे आर नियर बाय टू 3। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन में देखो, आपको सब डायरेक्शन देखिए, सो दिस विल बी द फाइनल। We'll keep it up to here for today's class. आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। If you have- सर Yes, हेलो सर, yes, yes, yes. ये जो लास्ट क्वेश्चन था सर्ड्स चैप्टर का, हाँ। तो उसकी स्लाइड जरा ओपन करना। ये बस यही। सर यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 3/2, हाँ हाँ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 रेज टू 2 रूट 15 आएगा ना? यहाँ पर बोल रहे हो? हाँ वही। ये माइनस क्यों आएगा? अच्छा हाँ, ये यहाँ पे माइनस प्रीवियस स्टेप में आपने माइनस लिखा हुआ है ना? हाँ, ये माइनस, that's correct. That should be minus, so ये भी माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से अकॉर्डिंगली चेंज होगी। This will also be minus, this will be minus, ये माइनस होगा, ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ, Rest of the thing will be same, बाकी बचा हुआ सब same। बाकी तो सही है सर। So that's correct. Thank you. Fine, then we'll keep it up to here. We'll see you in the next class. Next class से हम ग्राफ चालू करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन DI. This is an important part of aptitude. तो एक क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से हर बार आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। We'll try to understand कि कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको चेक करना है। Fine. So if you have any doubt, you can ask or you're free to leave. Thank you. थैंक यू। So please send this PPT, sir. Like we didn't get as of now.